So welcome Priyadarshan to the 94th episode of Wednesdays for Waste Warriors, and we are very happy to have you here. Um, Thank you. Wednesdays for Waste Warriors is now marching towards 100th episode, और आपके साथ आज हमें ये 94th एपिसोड करके बहुत खुशी हो रही है because biogas is a very important solution for the 60% or let's say two-thirds of the garbage that is accumulated. And wet garbage तो हर दिन हर घर में हर रेस्टोरेंट में हर जगह होता ही है, right? बिल्कुल। और उसका सोल्यूशन करना सबका सिरदर्द बन गया है. सो वील बी वेरी हैप्पी टू लर्न फ्रॉम यू कि क्या कर सकते हैं लोग एंड व्हाट ऑल कैन वी डू. सो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट. वेलकम प्रियदर्शन. एंड सबसे पहले तो मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछना चाहूंगी. आप इतने यंग हैं और आपने इतना बड़ा भारी सॉल्यूशन कब सोच लिया? कब से आपकी ये जर्नी शुरू हुई? कैसे आपको लगा कि ये सॉल्यूशन हो आपके दिमाग में आया? लेकिन उससे भी पहले आप प्रियदर्शन सहस्त्रबुद्धे कौन है, वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करिए, सबके साथ शेयर करिए. ओके, बाप रे, बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है. बट लव फॉर नेचर, पेड़, नेचर इन जनरल, ये बचपन से ही मुझे था. और द डिजायर टू डू समथिंग रिलेटेड टू नेचर वो पहले से मन में था. लेकिन जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो वी वर एक्सपोज टू दिस आइडिया ऑफ क्लाइमेट चेंज because of a documentary called An Inconvenient Truth. And this documentary was quite an eye opener. And जब आप इन सब चीजों के बारे में सोचते हो तो it really makes you, it disturbs you. These are very disturbing facts. Okay, add to it the issue of climate. So essentially इन सब विषयों में कुछ करने के लिए जो इंस्पिरेशन है, दैट इज इन दिस डिस्टर्बिंग फीलिंग जो जहन में आती है व्हेन यू गेट टू नो ऑफ ऑल दीज आइडियाज. Yeah, so that disturbing feeling was there then and it still continues to be there even today. That has not gone. And perhaps the only way to find some peace is to do something about it. So that's really where my heart is when I think about these matters. Now, coming to the specific idea of biogas, I was a student in a program called Nirman, which is a program by doctors Abhay Bang and Rani Bang. And they conduct this program for youth. And the central question really that is discussed in that program is how do I decide what I want to do in life? And one broad theme around which you try to find this answer is, what does the world need today? And can I do something to fulfill that need of the world? Could that be a way in which I could try to answer this question for myself? So solving for the climate problem, solving for this entire problem of the fact that we are living on energy, which is petrol, coal, all of that is going to finish. And we are living as if it is infinite. So trying to do something for this is the direction which I wanted to do some work in, but it did not happen easily. Dr. Anand Karve, he's a very senior scientist. In fact, I call him a young scientist because he's now 88 years old, but I would still call him a young scientist because he's constantly thinking about the next idea that he wants to work on. So he has done very fundamental work in the field of biogas. And he was one of the guests who had come in our Nirman camp. So since then, the idea of biogas was in my mind, and I wanted to do something in that domain. But after I graduated from IIT, after 5 or 6 years, in 2015, that is much later, 7 years after I graduated,
I actually started working on this subject because I wanted to manage my own waste. So very coincidentally, I had happened to meet Dr. Karve, and he had made a CD, a video CD, which was a do-it-yourself kind of CD where you could just see it and make your own biogas device. And that's where I made the first device. And I was practically hooked because that was my first opportunity to actually practice the engineering that I had learned. And it was a very again a distressful journey, because although I had a degree from IIT and everything, but it doesn't mean that I could actually put things into reality. So that was a very tough journey for me, which was, I call it the bridge between theory and practice. But fortunately, I didn't give up. I stayed put. And because I was using the system, I started to improve it, in the sense that I tried to make my experience as a user more friendly. And whatever improvements I made from that perspective brought me to a device which I felt now this was fun to use, this was easy to use, so I could give it to folks around me. And I began with my near family, my near friends, my aunt, my friend. Practically, I imposed them to use this system. And that's how we began. Yeah. Wow. The wise young man. Wow. Full of wisdom. इट्स रियली इम्प्रेसिव प्रियदर्शन कि इतने छोटे उम्र में अगर हमें सही मार्गदर्शन मिल जाए, सही रोल मॉडल मिल जाए, तो हमारा सोचना, हमारा कुछ करने का तरीका, हमारा सब कुछ कितना इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, सही चीजों से इन्फ्लुएंस हो जाता है। आई मीन टू से जो आज हम देख रहे हैं कि सब जो भटके हुए लोग हैं, समटाइम्स बहुत दुख होता है देखकर कि हम बाकी सब चीजों की बात कर रहे हैं कि ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, लेकिन हमको यही नहीं पता कि हमको हमारे लाइफ में हमारा पर्पस क्या है ना। तो जो बड़ा Agreed, बड़ा agreed. क्वेश्चन है वाई का, वो आंसर करने के लिए किसी के पास शायद बैंडविड्थ नहीं है, लेकिन बाकी सारी छोटी छोटी चीजों के लिए ही धक्का मुक्की और भागा भागी हो रही है। सो रियली ऑसम दैट आपने ये सब इतने यंग एज में सोचा और आपको इतने अच्छे रोल मॉडल्स मिले, इतने अच्छे मेंटर्स मिले और सही अपॉर्चुनिटीज मिली। दैट्स रियली इनक्रेडिबल। लाइक बिल्कुल, बिल्कुल. I agree. जब आपने ये शुरुआत की, आपने कहा कि आप आईआईटी गए, मतलब आपने इंजीनियरिंग करी है ना, तो एक वो होता है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, मेरा बच्चा लॉयर बन जाए, तो मतलब वो ही हैज रीच दैट प्लेस। अब वहां पे जाने के बाद अगर आप कचरे में काम करना चाहें, बायोगैस बनाना चाहें, जो कि गांव गांव के लिए है, कि गांव में गोबर है, फसल का वेस्ट मटेरियल है, तो गांव वाले लोग बायोगैस बनाते हैं। दैट इज द ओल्ड टाइम थिंग जो मैंने भी सुनी हुई है। तो एक शहर का यंग लड़का अगर वो बोले अपने पेरेंट्स को कि अब मैं बायोगैस पे काम करना चाहता हूँ, तो आपको क्या सुनने मिला? आपको क्या धक्का मिला, डांट पड़ी, सपोर्ट मिला, क्या हुआ? वो उस समय की बात आप सुनाइए थोड़ा। हम्म. तो एक्चुअली ये जो सवाल है, इस तरह का जो एक असमाधान है, वो थोड़े पहले मैंने अनुभव किया. व्हेन आफ्टर आई ग्रेजुएटेड, आई वेंट I got a scholarship, a fellowship. I was a part of a fellowship program wherein I got an opportunity to work in rural India. Mhm. And I worked for a few months, 7-8 months in Gadchiroli, and then I was in Nashik district Okay. for the next 2 years. उसी phase में there was a sense of थोड़ा no, कि what are you doing? You've just graduated from IIT. Why are you going to rural India, and so on and so forth. But when I happened to work on a program called National Rural Employment Guarantee Act and its implementation in rural India. Mhm. And one of my biggest learnings was that if I want to do justice to my capability, Mhm. the best medium for me would be the enterprise medium. Mhm.
when I was seeing government trying to give jobs to people and how the government can't actually do justice to your aspirations. Mhm. I was also experiencing working with the government machinery. And even today, we have this great attraction for the civil services, IAS, IPS, this, that. And I was seeing in what environment the IAS officers, the collector of the district, and all they had to work. And I was trying to find out for my own whether these are the avenues where I want to do something. But what I felt would work best for me was the enterprise space. And my parents were running their own business. So I thought I should join my business, and this is where I would find what I wanted to do. This medium was the one which I wanted to be in. So I joined our family business. My mother was running the business at that time. And it worked out because my mother, her desire of me getting back on track was fulfilled. I wanted to also be a part of the business. So that's how I joined our business. It was a manufacturing company. We used to make auto components and furniture. We used to manufacture. So I joined that business and I was constantly struggling within to find out my field of work related to environment. That was the struggle which I went through from 2011 to 2015 when I, by a very chance event, landed up on this subject of biogas. And that the biogas system I made for our business to manage the waste in our company. And then when I started to gradually find customers for it, actually my mother also got convinced that there is business potential in this work. And so she also encouraged and supported my work. So I like to say that our work was incubated in my parents' business. They incubated this new business, and then 2019, when both me and my mother felt that this business can now stand alone on its own feet, we registered a separate company. So that was how it was. So actually, my parents were extremely supportive of Good. what I was doing. That's a lucky situation, Priyadarshan. बहुत ही really really good because बहुत सारे लोगों के साथ like unfortunately ऐसा नहीं होता. उनको बहुत सारे question answer और वो सब से गुजरना पड़ता है, but amazing, really really lucky. Absolutely. It was good that you got that incubation and that support and the Sahara to launch everything. So बहुत ही बढ़िया Yeah. है. उसके बाद में of course it was all home ground, तो आपको you know सब I would say mostly set था because you already had a manufacturing business and all. लेकिन मार्केटिंग के लिए जब आते हैं, इतने सारे दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, बायोगैस, शहर में बायोगैस, Hmm. ऐसा वाला कभी क्वेश्चन आया कि हमें लाइक मैंने कोविड के टाइम पर मुझे याद है हमारे खुद के सोसाइटी में क्योंकि उस वक्त बहुत सारे सब वेस्ट के वो हो रहे थे ना कि इसका क्या करें उसका क्या करें. सो मैंने ऐसा Yeah. ऐसा एक सवाल उठाया था और पूछा था कि अगर हर सोसाइटी के पास उनका खुद का बायोगैस का सिस्टम हो तो इसमें कितना अच्छा होगा, किसी के पास ये गीला कचरे का प्रॉब्लम नहीं रहेगा. तो मुझे ये बोला गया था कि अभी तुम नई नई इधर आई हो, तुमको पता नहीं है कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये. कोई बात Hmm. रखना इतना मुश्किल काम है. कोई सोसाइटी के पास जगह नहीं है और सोसाइटी अपने खुद के प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रही है. बायोगैस भी क्या करेगी, ब्ला 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 ब्ला. एंड बिकॉज आई वॉज लाइक जस्ट फ्रेशली, मैं उसी वक्त 6 महीने पहले या कुछ महीने पहले ही वापस आई थी यूएस से, तो मैंने कहा ओके, आई मुझे ज्यादा नहीं पता, आई विल नॉट argue or but that thing was in my head कि biogas is a solution. Why is it not promoted commonly हर किसी के लिए. Right. Right. और फिर मेरा एक कॉन्वर्सेशन हुआ एमएनआर, जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट के किसी, Yes. Hmm. उन्होंने भी मुझे ये बोला कि बायोगैस इज अ फेल्ड सिस्टम. तो Yeah. आई वाज वेरी शॉक्ड कि एक रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से मुझे ये सुनने मिल रहा है कि बायोगैस इज अ फेल्ड सिस्टम. तो मैं
किस वर्ल्ड में हूँ? क्या देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई थिंकिंग कि मैं बायोगैस बायोगैस के बारे में प्रमोट कर रही हूँ? एंड ये क्वेश्चन हमेशा मेरे पास था कि मैं पूछूंगी किसी से, और आज मैं आपसे पूछ रही हूँ। अगर Yeah. बायोगैस एक सोल्यूशन है, तो क्यों उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा, या यू नो मेन स्ट्रीम नहीं किया जा रहा? व्हाट इज इट दैट? Right. Correct. So I like to look at it this way, okay? The tech entrepreneurs and I ये tech जो शब्द है ना वो unfortunately बहुत लिमिट किया गया है for the software, but the tech entrepreneurs are actually also needed in these spaces to bring technology into the hands of common people. And in the case of biogas, it is actually tech which we have already known. So, to be honest with you, I believe that the biggest gap is the entrepreneurial gap, where we are not innovating to find the business models so that we can do this as a business. And this is, I think, this is the only gap. There is no other gap available, and this is the gap we are trying to fulfill. I'll give you a parallel example, Yes. and the example is that of health. It is, अगर देखा जाए तो to stay healthy, you just need to eat well and to exercise well. So simple. But करते नहीं है ना हम लोग. And which is why we need the real entrepreneurs to bring this behavioral change into people and build a business model around it so that they can also make a living on it. So these are, I believe, parallel examples. And this is, we have now, I'm happy to say to you that just last year we installed Vayu in a housing complex with 750 flats. There are about 6 to 7 towers, and on each tower on the terrace, we have set up Vayu for that, the waste of that building. And the gas is piped to some of the people who live in the same building. Okay. So we have actually cracked this problem. And if you go over there and you will ask, कहाँ है यार आपका setup दिख तो नहीं रहा है? मतलब you'll be like, अरे हाँ. कहाँ है? Because it's right up on the terrace, a space which was anyways unused. So the ground space is not required. So essentially, we have now cracked that problem. So now the questions that we need to answer are really the business questions of how to now take this to people, how to use modern available social media tools so that we can reach out to people. And this is the leg on which we are working now. मुझे बहुत खुशी हुई है सुन के। बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी सोसाइटीज हैं, स्कूल्स हैं, ऑफिसेज हैं, लाइक हर जगह हम्म। से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, हर कोई यूज कर सकता है ना? हाँ जी हाँ। वैसे ही हम बोल सकते हैं कि बायोगैस भी हर कोई यूज कर, लाइक बल्क वेस्ट जनरेटर्स, ऑफ कोर्स जहाँ पे बल्क निकलता है, जी हाँ। कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल कर सकते हैं। एंड सी आवर स्मॉलेस्ट सिस्टम कैन मैनेज एनीवेयर बिटवीन 0 to 2 kgs which can fit in the balcony. हम्म, तो इसको मतलब छोटी तो सिस्टम बन ही सकती है, छोटी भी, छोटी। मतलब स्मॉल ब्यूटीफुल इन दिस केस, जितना छोटा उतनी अच्छी, उतनी इजी, उतनी सिंप्लिसिटी उसमें। तो छोटी भी बन सकती है एंड एट सोर्स बन सकती है। सो इफेक्टिवली आई एम कॉन्फिडेंट कि सी देखो, मेरे घर में वेस्ट निर्माण होता है ½ किलो, लेकिन मेरे घर में वेस्ट मैनेज होता है 5 किलो। नाइस। So I am managing 10 times the waste that I am generating. I am a waste sink. हाउ आर यू डूइंग दैट? Well, because I have a biogas system in my house, and I manage waste of my neighbors, and I am LPG free. I cook entirely on waste. मैंने आपका वो So, वीडियो देखा था, दैट वाज right, थिंग दैट आई सॉ, एंड मुझे वो yeah, देख के बहुत खुशी हुई थी कि somebody in Pune is doing that. Wow. absolutely. So मैं अगर कर सकता हूँ, I can manage 10 times the waste that I'm generating. I have solved a problem, right? Yes. Now the only and I look at it like a vaccine. I have the vaccine now.
It needs to go to the whole world. सो चैलेंज क्या है? कोई नहीं है. It's just that we are not doing enough. There's no challenge. मुझे तो challenge दिखता ही नहीं है अभी. हम्म. सो It's a मतलब. business challenge. जो भी challenge है ना, it is in the domain of business. How do you scale a business? See, देखो Zomato ने जैसे 9,000 crore rupees का investment stock market पे listing करके they got 9,000 crore rupees for what? For delivering food. हम्म. Okay. People like me, we need to now take up this challenge and raise the same amount of money and to deliver energy into people's house. यस, बिल्कुल. So it's a business case. So my current need is to build a team who can build a bigger business around this possibility so that we can scale our impact. वंडरफुल. यू विल गेट दैट टीम. हमारे में से बहुत सारे लोग होंगे जो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे डेफिनेटली. Bilkul, bilkul. And the last year we broke even in हम्म. our 6th year. So we are now a profitable company. वेरी गुड. एक्सलेंट. Yeah, so we have crossed that. वो एक होता है ना यार ये तो. But Zomato भी लॉस बनाती है यार. But anyways, we are a profitable company now. गुड गुड. बी प्राउड. वंडरफुल. बिल्कुल. सो आप कह रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है. दिस कैन बी फ्रॉम 2 किलो बायोडिग्रेडेबल वेट गार्बेज को भी मैनेज करके आप बना सकते हो, और ज्यादा भी बना सकते हो, लाइक एक पूरी सोसाइटी टावर भी बना सकता है. सो बिल्कुल. आपको ये, और इंडिया में ऐसे कोई और भी हैं जो ये कर रहे हैं, जैसा आपका मॉडल है, जैसा आपका सिस्टम है, वैसे और भी लोग कर रहे हैं? जी हाँ. एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं. मतलब बहुत सारे मतलब से 10 20 चलो. ओके. ओके. जो who are interested in the small systems. हम्म. बट अभी चूंकि गवर्नमेंट ने बायोगैस विषय में बहुत रुचि दिखाई है, द बिगर बायोगैस प्लांट जैसे टनों में जो अनेक टन 10 टन 20 टन 40 टन 200 टन उनको भी सरकार प्रोत्साहन दे रही. हम्म. बिग प्लेयर्स ऑल्सो नाउ हैव कम. हम्म. तो ये थोड़ा चैलेंज हो गया. देखो वेस्ट इतना बड़ा प्रॉब्लम है बिल्कुल. कि कितने बड़े प्लांट एंड बड़े प्लांट के बड़े दुख होते हैं ट्रू. क्योंकि उनका सबसे बड़ा दुख होता है कि वो वेस्ट में कहाँ से लाऊं. हम्म. तो मेरी सोच ये है कि जो एक इनहेरेंटली गंदी चीज है मतलब कचरा, हम्म. उसको उसको ऐड करके उसको जोड़ के फिर से इकट्ठा करो, फिर वहां जाओ उसको ट्रांसपोर्ट करो उसको सेग्रीगेट करो. मतलब इस सब झंझट में क्यों पड़ना है. वी वुड रादर बिल्ड स्मॉल टेक एंड सो दैट वी कैन मैनेज दिस सब्सटेंस एट सोर्स. जितना सोर्स के नजदीक हम हैं उतना उसका जिसे उतना डिग्निफाइड वे में हम उस वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं. बिल्कुल. जैसे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस भी कहते हैं कि इन सिटू, मतलब कि जहाँ पे वो वेस्ट जनरेटर है उसको अपने ही प्रिमाइसेस में उसको रिजॉल्व करना है, मतलब एड्रेस करना है ना. सो ये बिल्कुल. सिटू प्रिमाइसेस के अंदर ही सोल्यूशन है. अगर किसी ने ये लगा लिया तो उसका 50 घर, 20 घर, 30 घर, जितने भी होंगे उसके हिसाब से उनको मॉडल मिल जाएगा. राइट. बिल्कुल. तो आपने सोसाइटी में ऑलरेडी सक्सेसफुली लॉन्च भी कर दिया, एंड आई एम श्योर दे ऑल मस्ट बी वेरी हैप्पी. सो जो 25 25 लोगों की सोसाइटी है, हम बहुत छोटे हैं ऐसे बोलेंगे, कोई 400 लोग की सोसाइटी है, वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ थिंग, या कोई बंगलो है. सो वो कैसे आपके साथ में या कैसे वो डिसीजन बनाए कि ये है मेरे पास कि मुझे मेरे पड़ोसी का भी लाना पड़ेगा कचरा, और वो गैस किसके घर जाएगी, या वो अगर हमारे पास कोई वॉचमैन के रूम में गैस नहीं है चाय बनाने की, तो वो पाइपलाइन किसके घर जाएगी. ऑल दोस चैलेंजेस आर आल्सो देयर, राइट? Yeah, but these are the ones which we solve for.
सो फॉर एग्जाम्पल जो हमने अभी मेगापोलिस करके हिंजवड़ी के पास जो बड़ी स्कीम के मैंने आपको रेफरेंस दिया, मेगापोलिस में कुमार प्रॉपर्टीज का एक प्रोजेक्ट है। हम्म। तो सैफरन सेरेनिटी ऐसे उन सोसाइटी के नाम है। ओके। तो हम घर घर में जाके हमने वी हैड अ अपर लिमिट कि हमको 20 जनों को गैस देना है। ओके। तो वो 20 जनों एंड से देर आर 100 हाउसेस, तो वी वेंट टू दीज 100 हाउसेस एंड वी helped our customer, which is Megapolis, Kumar Properties, to identify these 20 people. ओके। Okay, and it's a doable thing. हम्म। Okay, it's not such a big deal. Okay, so Okay. it's very solvable problem. Okay. जो जो दूसरा है कि बेसिकली क्या है, उनको हम पाइपलाइन देके बायोगैस का कनेक्शन देते हैं हम्म। एंड दे कंटिन्यू टू हैव देयर रेगुलर कुकिंग जैसे एलपीजी, हाँ। एंड दिस वर्क्स इन पैरेलल टू दैट। अच्छा। सो जब तक बायोगैस है वो बायोगैस चलाते हैं, वो खत्म होने के बाद दे आल्सो हैव देयर एलपीजी सेटअप टू वर्क ऑन। ओके। ओके, सो वी वर्क इन पैरेलल। दिस इज द थिंग फॉर द हाउसिंग सोसाइटीज। ओके, नाउ when it comes to individuals, we have a small system which can be fit into the balcony, so वो flat में भी लोग लगा सकते हैं, and that is only meant for their own waste. ओके। तो उनका वेस्ट उसमें जाता है, उनके गैस की बचत होती है, and they are happy. The ओके। whole chakra closes inside your house. ओके। Okay. Now, if you want to go LPG free, like I want to, because वो मेरी इच्छा है। तो this is where another social aspect of our work comes in. We work with Swachh. या। Swachh is an amazing project. या। मतलब जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ ना, मुझे अमेज ही होने को होता है। तो 4,500 and increasing नंबर ऑफ वेस्ट पिकर्स इस कोऑपरेटिव के मेंबर्स है, या। और वो घर घर में जाके डोर स्टेप से दे कलेक्ट वेस्ट। ओके, स्वच्छ का बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि इट हैज ऑर्गेनाइज्ड ऑल ऑफ दीज पीपल टुगेदर एंड दे कन्विंस द पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कि ये लोग आपका काम कर रहे हैं, सो यू नीड टू एक्नॉलेज देयर वर्क। एंड पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज अ वेरी यूनिक सिस्टम where users like us citizens, we pay a service charge directly to the waste picker for collecting the waste from our doorstep. Okay, and we are supposed to actually only give out the non biodegradable waste. The biodegradable we are supposed to manage on our own, and these people, they earn out of putting this non biodegradable waste back into the recycling chain. So they are doing an extremely valuable work for the world, for us, for keeping this world clean. Okay, but what we do is we don't manage our wet waste, and therefore they collect that also. And what they do is they take it from our doorstep to the nearest collection point where corporation vehicle picks it up. And corporation doesn't do anything useful with it. Primarily the corporation landfills it. Okay, so now we are working with Swachh, and we are skilling the Safai Karmacharis to operate and maintain biogas plants. Nice. So now if you want to go LPG free, like I want to go, I can approach Swachh and say, you know what, I want to go LPG free, and Swachh will say, great, we will operate and maintain your plant. We will supply the necessary waste so that you can go LPG free. So this is one systems change that we are trying to bring about in collaboration with Swachh, where the waste picker will become a climate friendly energy supplier. Wonderful. I like that. बहुत ही बढ़िया. Good thought. And this increases their livelihood. Yes, definitely. Definitely. क्योंकि स्वच्छ के साथ हम लोग भी बहुत काम करते हैं, और उनके जो चैलेंजेस हैं, उनकी जो स्टोरीज हैं, वो रियली बहुत सुन के बहुत बुरा लगता है कि 75 रुपए और 85 रुपए के लिए भी लोग झगड़ा करते हैं, सो I know.
इज जस्ट डिग्निटी, और बहुत सारी चीजों के सवाल आ जाते हैं कि क्या लोगों को इतना भी, लाइक 80 रुपए और 85 रुपए से क्या कोई बना लेगा, महल बना लेगा, क्या करेगा, बट किसी दूसरे की वो पूरी एक घर की तनख्वाह है, बट वो भी नहीं समझ सकते लोग, यू नो। बिल्कुल। आई मीन ये समझता ही नहीं हमारा सोसाइटी ऐसे क्यों बिहेव करता है, या वो बोलते हैं ना कि तो ये आपने बोला ना 70 और 75 रुपए हर घर से उनको सर्विस फी देनी है। हम्म। तो दिस लेडी नाउ, एक मेरे घर में एक बाल्टी है, periodically she comes and fills that balti with waste which goes into my vayu. For giving me that waste, she earns 300 rupees नाइस, a month. वेरी गुड, If she operates my plant, she would earn about 800 rupees a month. अमेजिंग। So this is what we are trying to do. And because I am saving the LPG cost, so उसके काम का जो मूल्य है वो मेरे एलपीजी सेविंग से हम नापते हैं। बहुत अच्छा, इट्स अ विन विन सिचुएशन, बहुत ही बढ़िया। Absolutely, absolutely. And like you and I, we are common people, लेकिन we feel helpless when it comes to energy. या, And energy is at the core of the climate problem. यस, तो उसके मामले में हमको बहुत हेल्पलेस लगता है, बट इन with methods like this, we can empower common people like you and I to बिल्कुल, take bold actions. बिल्कुल। मैं फुल माइंडसेट में हूँ और इन्फ्लुएंस होती जा रही हूँ हर एक सेंटेंस से। कि ये जब मैंने आपका वीडियो देखा था तब मेरे मन में छोटा सा ख्याल था कि ऐसा मुझे भी अचीव करना है, लेकिन अब मैं आपसे बात करूंगी और मैं उसको फिगर आउट करूंगी कि मैं कैसे उस वहां तक पहुंच सकती हूँ। इट्स रियली रियली अमेजिंग। Absolutely, जब, definitely. यस, हमारे पास जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं इस वक्त उनसे भी पूछना चाहूंगी, क्या आपके पास कोई सवाल है जो आप प्रियदर्शन से पूछना चाहते हैं? दे आर ऑल फ्रॉम वेरियस सिटीज, एंड अगर उनको भी ऐसा ऑप्शन चाहिए तो आप प्लीज आस्क, और प्रियदर्शन से आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं अगर आपके पास कोई क्लैरिफिकेशन के लिए पॉइंट है तो। यस, मंदार। नमस्ते। मैं प्रियदर्शन का शालेय मित्र हूँ और अरे धन्यवाद। मेरा प्रश्न ये है कि जब आप अप्रोच करते हो किसी को तो हम्म। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? उनको ये करना नहीं है, ऐसे क्या हो, किसके वजह से होता है? और आप क्या कैसे कन्विंस करते हो? शायद वो वेस्ट खराब हो जाएगा वायु के अंदर जो पड़ा है, ऐसा कुछ होता है? या सबसे बड़ी चीज क्या होती है जो आपको कन्विंस करनी पड़ती है? हम्म। गुड क्वेश्चन। ओके, सो एक्चुअली मंदार, जो जिनको वेस्ट के विषय में कुछ करना ही नहीं है ना, उनको मैं कन्विंस कर ही नहीं सकता। हम्म। तो लेकिन जिनको करना है, ओके, perhaps the only reason that currently they may choose not to buy Vayu is because it is expensive. ओके, तो मुझे बस उनको ये कन्विंस करना है कि ये एक्सपेंसिव नहीं है, ये आपके मोबाइल फोन से भी सस्ता है। सो इस कन्विंसिंग में जो भी हम नाट्य करते हैं वो हमारा सेलिंग स्किल है। ओके, ओके, एंड वी हैव टू इसेंशियली, इट्स अ राइट नाउ एट मेरी लेवल पे जहां पे हमारा प्रोडक्ट थोड़ा एक्सपेंसिव है, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज। ओके, थैंक यू। तो एक क्वेश्चन आशु भी पूछना चाहते हैं, लेकिन मेरा भी एक क्वेश्चन है। सो हमारा प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, अगर ये चैलेंज है तो हमारा प्रोडक्ट एक्सपेंसिव क्यों है? Yes, good question. So, see, first of all, we are a business, so we have to cover costs. हम्म, Okay. Now, scale of the business, जैसे हमने अभी, because we got certain amount of sale, we were a profitable business. Okay. So, typically, I'll give you an example. 25 साल पहले जब मोबाइल फोन लॉन्च हुए तो इनकमिंग कॉल के लिए भी हम पैसे देते थे और आउटगोइंग कॉल के लिए भी पैसे देते थे। Gradually, as scale has built up, the costs have gone down. हम्म, Okay, so primarily, I will say that this is a scale issue. We are at a very small scale right now, so we have not yet benefited from the economies of scale.
Mhm. As we scale up, the cost will go down. I So this have is the primary reason. ओके मेरे पास एक फॉलो अप क्वेश्चन है, लेकिन मैं क्यों बढ़ती जा रही है तो मैं पहले बोलूंगी कि रश्मि आप पूछिए, फिर आशु पूछेंगे, और फिर और दो क्वेश्चन। रश्मि आप पूछिए क्वेश्चन। हाय प्रियदर्शन, हाय अनुजा। Hi. शायद आपने ये पहले बताया होगा, आई जॉइंड अ लिटिल लेट, बट Okay. इज दिस फैसिलिटी अवेलेबल इन बैंगलोर एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सेटिंग दिस अप? Yeah. So right now, this facility is not available in Bangalore. We don't have a team in Bangalore. The if you want to set up an individual system in your balcony, it costs 44,000 rupees. Okay, so we have a terrace which is around 1200 square feet. So it Oh. is possible to set up on that? 200%. So how Very does easy. one go about that? How does should we approach you directly? Yeah, you can approach me directly, and we'll have a conversation. Okay, I'll tell you. Done. हम क्यों बैंगलोर अभी तक नहीं आए हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. We'll see if we can find a way around that. Okay. Great. Thank you so much. Yes, welcome. आशु अब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Yes. Hello, Priyadarshan. My question is that when we do aerobic composting, that sometimes small pieces of plastics are there. Yes. Fine. So then we sieve it, make the compost, and then sieve it. They are away. We remove them. But in Yes. the biogas plant, the waste should be really very clean, and it is tough to get that so much clean waste, wet waste. Right. Is this So a actually, challenge? no. This is not a challenge because whatever plastic that may go in inadvertently, okay, उससे हमारे system में कोई परेशानी नहीं होगी. In our system, every 6 months, we remove the undigested material out of the system. And इस सर्विसिंग के दौरान ये प्लास्टिक वगैरह भी निकल जाता है. तो एज सच हमारी जो माइक्रोबियल प्रोसेस है उसमें इस प्लास्टिक के कारण कोई परेशानी नहीं होती. Okay, in the gas formation, it doesn't hamper that thing. नो. और आपको ताज्जुब होगा, मतलब ये सब मैं करके सीखा हूँ. आपने अगर कोई शाइनी रैपर उसमें गलती से डाला, और 6 महीने बाद जब वो सर्विसिंग करते हुए टाइम पे वो निकलता है शाइनी रैपर, तो उसका जो शाइन होता है ना प्लास्टिक का, वो एक कण भी उसका शाइन कम नहीं होता. तो प्लास्टिक इतना इनर्ट है, निसर्ग के पास प्लास्टिक के सामने कोई इलाज नहीं है कि वो पूरा शाइनी प्लास्टिक ही बाहर आता है. इतना वो एक ह्यूमन ने निर्माण किया हुआ एक हमें अमेजिंग प्रोडक्ट है. हीट प्लास्टिक. Okay, thank you, thank you. Yeah. थैंक यू. वी हैव आपके वचना से. वचना. Am I audible? Yes. Hello. Hello. This is Vachana here. Hello, am I audible? Yes, you are audible. Back. Yeah. Yes. Okay. So hello Priyadarshan. I wanted to ask if I want to run my gas geyser Yeah. with Vaayu. Is Yeah. that possible? We are a family of 4 and we generate very little waste because we are very low wasters. We generate very little waste. So I wanted Yes. to ask you how many kilos of waste would I need if I have to do that? We are a family of 4. And right now, whatever waste we generate, it goes into our compost bin. So Yes. I'm familiar with composting, but if I have to operate my gas geyser, otherwise I have piped LPG. LPG. Right. I don't want it for cooking right now. Yeah. Understood. So I used to use a gas geyser in my house on biogas. Okay. But right, I was, I have to, some work is pending on that yet. I have not yet completely done it to my satisfaction. Okay. So the answer to your question is, in principle, it can be done. Right now, I don't have an off-the-counter offerable solution for that. Okay. But you're And still working on it. I am not right now working on it, but I plan to work on it. It's a very small task which is pending, but somehow with other priorities, I have not been able to do it. Okay. But it's a very doable thing
and but I don't have the input output numbers कि कितना किलो डाल मतलब कितना गैस लगेगा एक व्यक्ति का नहाने का पानी हाँ गर्म करने के लिए, वो डेटा अभी हाँ मेरे पास नहीं है. So, okay But okay it is so possible, okay, in the near future. okay okay I'll wait. I'll definitely wait for it. Sure. One of your friend Ravi Balgi is also my friend, and Okay, he yeah, so he was no, we were talking of meeting you one day, but it didn't happen. But I'll wait for this to happen. sure, And sure. Are you in Pune? yeah, I'm in Pune. Oh, Yes. great. So we have one reason to do it now. Good. yes. Yes. Okay. Yeah. Thank you. To Yeah. figure out that calculation, do you need an intern? I don't mind. Would love that. Okay, great. We have a lot of college students who ask for internship. आपको कौन सा वाला इंजीनियर होगा वो बताइए. कौन सा वाला? कैसा ट्रेंड अनट्रेंड कैसा इंटर्न चाहिए होगा वो बताइएगा. हाँ नहीं देखिए, जिसको कुछ हाथ से कुछ करने की इच्छा है, हम्म. जिसके अंदर आग है ना, वैसा इंटर्न चाहिए. अब क्या बताऊं आपको. Wonderful. Now we have Angad and Rajasi. Angad, आप कुछ कह रहे हैं, राजहंस के बारे में बताइए. Oh yeah, so yes. हाँ वही कहना था कि राजहंस के बारे में भी बताना. Right. So the food waste biogas that we make, we call it Vaayu. Okay. We also make a biogas which works on human waste. Okay. That right now we install it for individual bungalows. The toilet output, only the toilet output, which is called black water, this connection goes to our system and it gets treated. What comes out can be directly used in the garden as water, and it generates cooking gas. So we don't need to put our human waste into the drainage at all. It can be managed at source in bungalows. This is our second solution. This is also a biogas technology. It is called Rajahans because I believe it is the Rajahans of waste management. It converts one of the things which we treat as the dirtiest into something so beautiful that we have called it a Rajahans. Very nice. ये मेरा सवाल था because जब गांव में बहुत साल पहले जो मेरे फार्मिंग वाले फैमिली मेंबर्स थे, तो उस वक्त उसे गोबर गैस ही कहा जाता था. सो वो एक कॉन्सेप्ट था कि सब गोबर स्टूल ऑल ऑफ दैट. फिर धीरे धीरे उसके अंदर आ गया कि कचरा भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ह्यूमन स्टूल भी मतलब दैट कॉम्बिनेशन केप्ट चेंजिंग. सो इट्स रियली नाइस कि आपने उसके ऊपर काम किया है. वंडरफुल. We have a question Rajsi wants to ask, and then Dr. Girish. Yeah, thank you, Amit. I just read Amit's message, who is using Vaayu and Rajahans. Very nice. Rajsi, actually, I asked in the chat, and some people have already responded, but Priyadarshan, maybe you can also share. So, when I started composting in 2017, I guess, so what happened is, in the initial days, when things go wrong, our compost bin used to get attacked by rats. So I'm just wondering, will the Vayu will also get attacked in initial days? Because we tend to make mistakes in the beginning. So I'm just little worried about it. So would like to know. Yeah, so the answer is no, not at all. Because in a biogas system, the digester is a closed system, completely closed system. You can imagine it as an animal which you are feeding, and the animal eats it all up. It goes into the stomach of the animal. So whatever food waste that you have fed is not exposed anymore. It is inside the system. So there is no access to that waste anymore. So there is no question of rats and other rodents trying to access it to eat it, because they have no access to it. And I tell you something very interesting. In my society, if anywhere there is a rat which is dead, a dead rat, I happily bring it and put it in my Vayu. So a Vayu will actually even take care of dead rats. I am not surprised by this reply.
Okay, thank you for sharing that. Yeah. Yes, I have more questions. I will get in touch with you because it's sure. very context specific. So I don't Yeah, want to bother it now. Yeah. sure, sure, sure. So we have Dr. Girish question, and फिर मेरा भी एक question है. Yes, Dr. Girish, please go ahead. Hello, am I audible? Yes. Yes, hi. Hi, everyone. Priyadarshan, I have one question with you. Last year, I reached out to your team because I was looking for some biogas installation in my institute at NIT Jalandhar, right? Next, Jalandhar. Okay. Like, but your team said that they are only working in Pune, I guess. Yes, yes, yes. So, so what are the chances that we can collaborate on this? Because I am also working on, with some scientists on developing the cost-effective solutions, basically for, the rural and village population at a scale. I mean, to manage, let's say, the waste of 2,000 plus households, right? So that's the Yes. because Anuja knows me that we are managing the waste of entire city here, and Hmm. some villages are approaching us, and the compost is not a very viable solution, Hmm. 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 right? So So we'll what can we'll we engage do on in this. in biogas? Yeah. I would We'll specifically would love to Yeah. you know. So I'll tell you the primary reason why we are not going out geographically is because we are committed to ensuring that the system will function. So if there is any problem that comes, we have to go there Mhm, and solve that problem. And geographically speaking, it becomes very difficult. Okay. mhm, So what we have, the strategy now that we have made is first find a local person who can okay. be our service partner. Mhm, We will train the service partner to solve for any problems that mhm, can arise in the biogas. Once that mhm, service partner is in place, I am happy. I am confident that, and then I can start selling in that geography. Wonderful. mhm, So if you can help us to find a local partner who can become the service partner, that person can come to Pune, we can train them in a mhm. 3-day training. And they go Okay. back all trained so that koi bhi problem aaya, so they can solve that problem and then we are willing to sell. Wonderful. That sounds like a good idea. Yeah, Yeah. I can try to send some of my team member or like Correct. someone can get trained and you can expand in, Punjab and North India Yes. region. Yes. I can And help you out on this. the thing, since you are from the research background, Yeah. remember that biogas is sensitive to temperature. Mhm. And in Yeah. Punjab, in the North India, you have very severe winters. Yes. So the system will not function. Its capacity, I mean, its functionality will go to about 20% in Yes, your see, harsh winter, which is 1 month. the waste is a, very global problem and we should, come together as a, research because I'm in touch with some scientists from MNRE and National Institute of Bioenergy. So Anujoy is doing a wonderful job in connecting, and I just read his message, her message that you are presenting. So that's why I joined just now because I came just now, and the purpose is to collaborate and provide the cost effective and the solution which are needed by our society at a scale, Absolutely. right? So Absolutely. And I'm in totally that open for way. collaboration. In that way, if we work together on developing some solution, because I don't believe in competition but on collaborations, only Yes. then we can make India garbage free, Agreed. I right? am So totally for collaboration. In fact, collaboration is the only way ahead. Exactly. yes, yes. So True. looking And, forward, we and, will and talk about typically, I this like to say later. that, if you want to create a song, you need somebody to sing it, somebody to write the lyrics, somebody to give the music, a Mhm. producer to. You need all these elements to collaborate. Exactly. तब जाके एक सुंदर गाना बनता है एंड लता मंगेशकर वो गाती है Then you तो want audience to live to, Right.
appreciate it. Definitely, हमने एक solution develop किया है. You put the mixed waste in the our sorting machine, and it can segregate it into biodegradable and non-biodegradable waste. क्या बात है. Because while working in a village, I realized that the people are not giving us the segregated waste. Yeah, So yeah, that yeah, was the yeah. biggest issue. And as I am a mechanical engineer by profession, so we develop a machine which you just put the mixed waste, and we can give you the segregated waste, biodegradable and non-biodegradable. And biodegradable, you can make biogas. You better know the whole process and Agreed, agreed, agreed. technology, Amazing. right? Let's So engage. We'll do that. so in that way, you will have the biodegradable waste available for your biogas, and Yeah, we have some other sales for our machine that can solve your problem, and it can create win-win for each other. indeed, indeed. Right? Sure. That's how the collaborations and scale works at a place. Of course. Agreed. We'll Yeah, yeah. get on a call and discuss this. Yeah, Sure. definitely, Anuja. Thanks. Amit has raised his hand. Amit, you are a proud customer, you said, proud user. Yeah, I would say that I'm really a very proud user of both the Vayu and Rajhans, and the experience has been a very good experience where I am now constantly generating my own gas. I have, I can proudly say that I have now disconnected my LPG cylinders वाह, completely. Wow. So क्या there बात is है. no more, yeah, there is nothing now. Now everything is on biogas. Maybe Priyadarshan, I'll have to contact you for changing the burner model, which was partly LPG and partly biogas to completely biogas now. क्या बात है. Yeah, वाह. that's one thing. But I would also like to add, in terms when you said that in colder climates, the effect is not as good. Well, it is partially true that the effect is not true. But however, I think Priyadarshan and the team could definitely work on some newer models for specific for these climate regions, which can take advantage of other technologies like maybe solar or maybe geothermal heating for the digesters, which would help to maintain it at the uh, required temperatures, the ambient room temperatures. So Definitely. yeah, it's not a very difficult thing to do, and only thing is that the cost incurred for such additional thing would be a one-time cost. Yes. After which I'm sure the paybacks will be really fantastic. Yeah, Yeah. Agreed. Indeed so. Yeah. Yeah. Thank you for the suggestion. that's great. Solar and geothermal. I'll keep that on mind. That's nice. Yeah. So because I've had inquiries from the north as well when I was talking to them about my systems, and they had the same question. But Yes. I think this could be really a path breaking thing where your specific models for colder regions can help out in its optimum usage. Agreed. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. That's it. That's all I Agreed. wanted to add. And thank you for giving me this opportunity to speak. Thank you, Amit. Thanks. Thanks, Amit. Yeah. So I have a question जो मैं बहुत देर से पूछना चाह रही हूँ. Does it mean प्रियदर्शन की जिसके पास में वायु बायोगैस का सिस्टम आ गया है, अब उसे कंपोस्टिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ वो उसी में डाल देंगे? हाँ, तो अगर केवल किचन वेस्ट के लिए हम कंपोस्टिंग कर रहे हैं तो जी हाँ, आप कंप्लीटली बायोगैस में वो सब डाल सकते हैं. लेकिन अगर आपके यहाँ गार्डन वेस्ट भी है, जैसे ड्राइड लीव्स, Yeah.
वुडी सब्सटेंसेस लाइक, तो वो वायु बायोगैस में नहीं जाएगा क्योंकि उसका गैस पोटेंशियल इन पदार्थों का बहुत कम होता है. Okay. So that can continue to go into your composting. Okay. So Yeah. टेक्निकली स्पीकिंग इसमें क्या क्या जा सकता है, जो हम वायु का जो बायोगैस बनाएंगे उसमें क्या क्या वेट वेस्ट या बायोडिग्रेडेबल जा सकता है? Yes. So in principle, anything that is digestible, ये मैं आपको just qualitatively बता रहा हूँ. मतलब either हम as humans or animals eat that food, eat that as food. Okay. तो essentially all vegetable waste, मतलब जो छिलके वगैरह हमारे घर में निर्माण होते हैं as waste, फलों के, vegetables के, all kinds of food which is cooked, which normally becomes difficult to go in composting. Any high calorie food like sugar या sugary food या rice, dal which has been cooked, all of this can go in biogas. Okay. Except there are 2-3 things which have no biogas potential practically. One is anything which is wood. So नारियल का छिलका एंड नारियल के बाल, टिपिकली जो हमारे घर में साउथ इंडिया में वगैरह बहुत नारियल यूज होता है. एंड एग शेल्स. सो एग शेल्स इज ऑल इनऑर्गेनिक, मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसमें डाइजेस्टेबल मटेरियल नहीं है. इट इज कैल्शियम, बेसिकली कैल्शियम कंपाउंड. तो वो भी नहीं जाता. लेकिन एट द स्मॉल स्केल हम वो सब डालते हैं उसमें, एक्सेप्ट फॉर नारियल के छिलके. एंड सर्विसिंग के टाइम वो बाहर आता है एंड इट गोज बैक इनटू आवर सॉइल. सो वी, वो हम थोड़ा बिहेवियर मैपिंग कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कस्टमर टू कस्टमर. व्हाट अबाउट जो लोग नॉनवेज खाते हैं और हड्डी फिश रहते हैं वो? तो वो हड्डी भी उसमें जाएगी. एंड सर्विसिंग के टाइम एक तो वो हड्डी अगर हमारे माइक्रोब्स ने कंज्यूम की तो वो डिसअपियर हो जाएगी. कभी कभी डिसअपियर भी होती है, कभी कभी वो बाहर भी आती है सर्विसिंग के टाइम. तो दैट विल गो बैक टू योर सॉइल. ओके. सो व्हाट अबाउट द, जैसे डॉग पूप रहती है, व्हिच इज अगेन अ वेरी बिग प्रॉब्लम. डॉग पूप कैन आल्सो गो? परफेक्ट, वेरी हैप्पीली. वेरी गुड. सो जो लोग रो रहे हैं इस वक्त की हर जगह डॉग पूप है, तो दिस इज अ वेरी गुड कम्युनिटी साइट के लिए कि डॉग पूप डाल दीजिए, सब जमा कर दीजिए, है ना? वंडरफुल. बिल्कुल. वेरी गुड. संतोष के Yeah. पास है, आज का सेशन थोड़ा लंबा जा रहा है, मैं पहले ही बता दूं. बस कोई इमीडिएट वो है एंगेजमेंट, सो आप लेट होने वाले हो प्रियदर्शन, बिकॉज हम करके रखेंगे. संतोष, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. Yeah, thank you so much. Hi, Priyadarshan. This Vayu is temperature sensitive, right? So I'm in Bangalore. How it will be a perfect match for Bangalore climate? It will work for Bangalore. Bangalore and Pune are very similar, and it works fine in Pune. When is the earliest training that you're going to conduct for service partners? No, sorry, I didn't hear you. What did you say? He's predicting it. When is the training that you are conducting? We are first looking for the people, then we will conduct the training. Yes, yes. And I'm open to any kind of help that you may have for us to identify such people in your geography. Yes, we will ask, we will kind of, get kind of requirements from you, and we'll be happy to post and get people. Sure. Amazing. By the way, you're also part of this My Waste, My Responsibility group. You are there in that group, Priyadarshan? No, I'm not in the, it's a WhatsApp group, is it? He's not there yet, but we will invite him to. Yeah, or else we can share the number in the chat section so that we can take a note of it and we can directly communicate with you. Yes. Sure. Yeah. Great. Now, may I know about the cost, please? Like, can you just give me some rough estimation of the cost? I saw different models in the website. Just now I explored. Yeah. But yeah. So our small system, which we call the 2 kg home system, is priced at 44,000 rupees. Okay. Minimum it starts from 44,000. Yes. Yes. Okay, got it. I'm putting my number also. Great. Santosh, you are in the group, right?
Yes, ma'am. I am in that group. Yes. Would you like to share the link? Because, on my laptop, I don't have. Yeah, I can do it. I can do it. Just a minute. So now if no one has any more questions, I'm going to go to a very serious, higher order thinking question or discussion with Priyadarshan. Priyadarshan, Okay. uh, connecting all of this, what you do, what you think, what you feel, the purpose, um, and spirituality. Yeah. You have done something in that. So उसके बारे में आप हमको बताइए. I will not give any names. I want you to share it. And for people who want to join My Waste, My Responsibility, here is the group link. Please join. Yes, please go ahead, Priyadarshan. So actually, spirituality is a big word, okay? But I just think it is, to me, it's about connecting with the mystery of the idea of life itself. Mhm. And that is something which, Vayu is, of course, it's a business. It everything related to business, all that. But to be honest, it's a very personal journey of trying to find balance with while we live in this world and trying to find balance within. Mhm. And since I was a kid, I have been listening to Kabir. And I found a lot of Kabir actually trying to connect us with the mystery of the fact that we are living. I'm alive. It's a mystery. And which is why I thought that I wanted to go to people. Okay, Vayu is one way in which I reach to people through an actual solution. But to talk about the philosophy behind it, I thought Kabir was an amazing partner in this whole journey. And so I was struggling to find the connection between Kabir and the climate work that I'm doing. And I ended up meeting these amazing folks from the Ecological Society. Mhm. And Ecological Society is an organization in Pune, and they conduct a course about ecology for common people. And together we came up with a program called Kabir and Climate, where we sing Kabir and interpret it for the climate cause. Beautiful. So that's one amazing process that we are going through. And I realized that while we make solutions, while we make actual solutions which you and I can use, but we also got to go and talk to it with common people, with masses. And I think music has that power to reach masses and reach the hearts of masses, not the mind, which is very analytical in nature. And sometimes many of our solutions just don't make analytical sense for today. But they do make a lot of sense to the heart, and we want to increase the power of the heart to overpower the analytical thinking of the mind sometimes. And I think this is what we are trying to do with the Kabir and Climate musical, if I may call it. Very beautiful. Very beautiful. So, I practice Buddhism, and there is one concept that attracted me to it. The line, "It is the heart that is most important." So, that I believe, जो आप कह रहे हैं कि हमें किसी के जब बोलते हैं ना, ओ ये बात तो दिल को छू गई. सो दिल को Yeah. छू वो इतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल है क्योंकि दिमाग ने याद रखा, भूल गया, लेकिन दिल को छू जाना इज अ वेरी ग्रेट रीच. Absolutely. तो Yeah. आप कबीर म्यूजिकल में गाते हैं. आपका क्या रोल है म्यूजिकल में? Yes, I sing. We would like you to sing something if you don't mind. I would love to. So, what do I sing? So I'll sing one of my favorite Kabir songs, which I learned from Prahlad Tipania, who is a philosopher, musician from Madhya Pradesh. Uh-huh. And I had this privilege of learning folk music from him. So this is a Kabir song which says, "Zara halke gaadi hako, mere Ram gaadi wal." And Kabir's Ram, what I have understood, is actually that thing inside us which makes us alive. That wo जीवित होना, that mystery is Ram, is what I have understood of Kabir. So let me sing it for you. Just
One sec. अब आपका आड़ा हो गया है वीडियो। जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी, गाड़ी भारी रंग रंगीली पहिया है लाल गुलाल, गाड़ी भारी रंग रंगीली पहिया है लाल गुलाल, हाकण वाली छल छबीली अरे बैठन वाला राम भैया, हल्के गाड़ी हाथों मेरे राम गाड़ी, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाथों मेरे राम गाड़ी, मेरे राम गाड़ी, मेरे राम गाड़ी। वाह, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। थैंक यू थैंक यू। मजा आ गया। सो मैं उस साइड, दैट साइड ऑफ टाउन की जो भी एक्टिविटीज होती है वो मैं हमेशा मिस करती हूँ, क्योंकि मैं दिस साइड ऑफ टाउन में हूँ। लेकिन जब भी कभी नेक्स्ट होगा ना, मैं जरूर आऊंगी, बिकॉज दिस वाज दिल छूने वाला, बहुत ही मजा आ गया सुन के। नाउ हमारे सारे क्वेश्चंस प्रियदर्शन ने आंसर कर दिए, लेकिन एक और बात है जो उन्होंने मुझे बताई थी कि उन्होंने रिसेंटली कुछ नई प्रैक्टिस, कुछ नई चीज सीख रहे हैं और कुछ नई चीज प्रैक्टिस करनी शुरू की है। प्रियदर्शन, वुड यू लाइक टू शेयर अबाउट दैट? Sorry, I lost your question. I had logged out. ओके, My फाइन। mistake. आपने मुझे बताया कि आपने रिसेंटली कुछ सीखना शुरू किया है और उसके बारे में आप शेयर करना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू शेयर हियर? Sure. Currently, I'm learning calisthenics, and calisthenics is a different form of training where it's a sort of gymnastics kind of training, but you do a lot of fun stuff, which is balancing, a handstand, and all this kind of fun stuff. So to me, it was about exploring the mystery of the body and doing a handstand and learning how to balance. And these are some of the interesting things that exist in our body, things like balance. You can't catch it like that. You can't say, आज मैंने 20 किलो डंबल उठाया, कल मैंने 25 किलो उठाया. Similarly, you can't tell about balance. वो balance एक ऐसी चीज है, वो हो जाती है और वो कैसे आती है आपको पता भी नहीं चलता. So these are some of the mysterious things that I'm trying to do. And I have a dream actually, um, to advertise Vaayu, wherein we have a photo of Vaayu, the system, and next to it, I'm doing a handstand. And with a tagline which says, trying to seek balance within and in the world outside. Wow. So this is this is a dream. It's not, I'm quite close to it, but I haven't reached there yet. But this is essentially the joy I would like to derive from the work that I'm doing. Sometimes, दुनिया बदलनी है, बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं हम सब. अभी ट्रैक पे गया था, सब जगह प्लास्टिक, इतना प्लास्टिक की क्या बताऊं. सो इट रियली बहुत दुखता है दिल. बट somehow trying to connect with this mystery keeps that joy alive, that wonderful sense of wonder alive. Yeah, so that's what I'm trying to do lately. Wonderful. You're doing great things, and we are all work in progress. Absolutely. So Yeah. let's be जैसे कि स्टीव जॉब्स ने कहा था कि we are all tiny specks, tiny dots in the universe, and to be the shiniest dot in the universe. Let's do our best. हम जो भी करना चाहते
मेरा ये पर्सनल है कि yes, I'm also a tiny dot in the universe, but I want to become the shiniest dot in the universe. So everyone Wow. have their own little dreams and aspirations. So मुझे बहुत खुशी हुई आपके साथ म्यूजिकली, फिलोसफिकली और एक पर्पस ड्रिवन ड्रिवन बिजनेस, लेट्स से हम हम प्रॉफिट ड्रिवन बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन जब हम क्लाइमेट एक्शन और क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि पीपल ओवर प्रॉफिट, प्लैनेट ओवर प्रॉफिट, Absolutely. तो Absolutely. purpose over everything, and that is how we can save our planet earth, because हम planet B की बात बहुत करते हैं लेकिन planet A को बचाने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है. So बिल्कुल. really awesome listening to you, conversing with you, and आप सब लोगों ने इतने beautiful questions पूछे. Thank you so much. आप लोगों के साथ yes, that journey continues, और आप हम अब like 100th एपिसोड की तरफ जा रहे हैं. सो वी आर वेरी हैप्पी दैट यू वर वन ऑफ आवर 100 के अंदर के गेस्ट. बहुत ही अच्छा लगा. आप सब लोगों ने माई वेस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा, एंड आई शेयर अ लिंक विथ यू ऑल्सो, प्रियदर्शन, टू ज्वाइन अस, बिकॉज ये Yeah, हम sure. सोसाइटीज में जो हम लाइक इन पुणे जो कर सकते हैं, आई वुड ऑल्सो लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट, कि हम कैसे स्कूल्स को या जिसको भी हम कांटेक्ट करके कर सकते हैं. सो दैट विल बी वंडरफुल. Absolutely. Thank you so much for inviting me, and I'm absolutely filled with joy meeting all of you. Thank you. Yes, I'm happy that finally it happened. बहुत समय से ये एक ड्यू था. आप सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए, इतने देर रहे. हम लोग लाइक टाइम हमने ओवरशूट कर दिया, बट एवरी मिनट वाज जस्ट ब्यूटीफुल. सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस. अगर आप लोग चाहें अपने अपने वीडियो को ऑन करना, तो हम क्विकली एक ग्रुप पिक्चर खींच सकते हैं, और फिर देन वी कैन से बाय. We have Akhlaq ji. Akhlaq, do you want to ask any question? आज आपने कोई सवाल नहीं पूछा. Yes, I got it. Wishing you all the best. I'm sure everyone has taken a lot. और सब लोग के सवाल आएंगे कि हम कैसे अब अपनी बायोगैस सेल्फ दैट हमारे टॉपिक ही ये था कि हम एनर्जी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं. सो उसकी यात्रा कैसे हमारी शुरू होगी, with the help of Vayu and Priyadarshan, of course. Does anyone have any Absolutely. question? Or should we say goodbye? Good night. Okay. Right. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank Thank you. you. Thank you, Anuja. Thank you, everybody. Thank you very much. Bye. 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 Thank Good you. night. Bye. Thanks, Priyadarshan. Thanks, Anuja. Wonderful. बहुत अच्छा लगा मुझे भी बहुत आपसे अच्छा. मिलके भी बात करके. And now we got to catch up. Got to meet up. We will definitely. Okay. चलो. Bye. Good Bye night. bye. See you.